You wake up one day and you start scrolling your social media feed, watching into it your own friends who are living a perfect life, enjoying exotic vacations, having perfect selfies, and you start feeling, कहीं मैं कुछ कम तो नहीं, बाकी लोगों से पीछे तो नहीं रह गई. And that's where you start feeling low about it. But let me tell you one thing. Are we meant to compare ourselves with others? क्या हमें अपने आप को दूसरों से कंपैरिजन करके ही पता चलता है हम कितने अच्छे हैं? We live in a world that is full of comparisons these days, where we measure our success in terms of likes and subscribers and shares, in fact. And the reality check is that कुछ समय बाद we realize, aren't we living the life what others tell us to do? हम दूसरों की बताई हुई जिंदगी तो नहीं जी रहे होते. Little do we know today कि असली satisfaction, असली खुशी इस बात में नहीं है कि हमने दूसरों को कितना पीछे छोड़ दिया, बल्कि इस बात में है that how better we are from today. Every day we need to better ourselves, and when we become a better version of ourselves every day, that is when we feel maximum satisfaction. So let me ask you one thing. How many of you feel that you are not living your own version? Yes, I can feel those nods across the screen. In fact, you're not alone. There are many who are like that, including me. Yes, मैं भी ऐसी ही थी. मेरा कोई भी picture, कोई भी video without filter नहीं जाता था. Every moment I wanted to put in a lot of filters onto what I am looking like. And gradually I realized I am a better version offline instead of online. Why should I filter every picture of mine? Let me be myself. And there started coming the confidence that I feel today. And my dear friends, let us know we are limited editions. Yes, हम इकलौते ही हैं जो इतने अच्छे हो सकते हैं. So why should we shun off from our own passions, our own quirks? And it is very normal to have one extra piece of cake. याद रखिए, जिंदगी आपकी है और इसको जीने का तरीका भी आप ही का होना चाहिए. दूसरों को दिखाने के चक्कर में अपने आप को खो मत दीजिएगा. Don't lose your authenticity. So, let's ditch the competition and be the better versions of ourselves every day. Here are my 5 mantras for the same. Mantra number 1. Learn something new every day. जब भी हमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहां हम फंस जाते हैं, जहां हमें लगता है कि कोई वे आउट नहीं मिल रहा है, what do we do? हम कुछ डिफरेंट सोचते हैं, कुछ यूनिक रास्ते निकालते हैं, कुछ ऐसे स्टेप्स ढूंढते हैं जहां से हमें कोई वो रास्ता मिल ही जाए कि हम उसको पालें. एंड इन इंडिया इट इज कॉल्ड जुगाड़ टेक्नोलॉजी. बट आई वुड से एवरी डे वी नीड टू लर्न समथिंग, बी इट एनी वे. इट कैन बी अ लैंग्वेज, इट कैन बी कोडिंग कोर्स, इट कैन बी सम टेक्नोलॉजी, इट कैन बी द किलर रेसिपी ऑफ योर फेवरेट डिश. कुछ भी सीखें, बट कुछ नया हर दिन सीखेंगे तो अपने आप को हर दिन इवॉल्व होता पाएंगे, हर दिन अपना बेटर वर्जन बन जाएंगे. मंत्रा नंबर 2, have me time. Many times we do away with this me time kind of thing. What is me time? अपना समय अपने लिए निकालना. My dear friends, it's not laziness. We have to have some time, चाहे 15 मिनट ही हो हमारे लिए, पर उन 15 मिनट में म्यूजिक सुनिए, स्क्रॉल कीजिए, फ्रेंड्स के साथ कुछ गॉसिपिंग, मस्ती, व्हाटएवर यू फील लाइक, या कुछ भी मत कीजिए. यस, इट्स फाइन. व्हाई? Because it's your life and you ought to have time with your own feelings, your own emotions, your own self. Spend a bit of time with you and that is going to add on a lot of productivity onto your life. Mantra number 3. जब आपने me time spend कर लिया, आप think out of the box. जब अपने साथ समय बिताते हैं तो आप नहीं जानते कि आपकी productivity कितना rise हो जाती है. And at times, what comes up is a beautiful hidden talent inside you. You're able to recognize and realize something different you have. कुछ different निकालना, कुछ different thoughts लेकर आना, कुछ different ideas के साथ evolve करना, and implementing those ideas in your life. This is what is called thinking out of the box. Detach yourself from the regular routine. हर दिन हम वही सब कुछ तो कर रहे हैं,
पर जिस दिन हम कुछ डिफरेंट करते हैं उस दिन हमें पता चलता है, हमें फील होता है कि हम पहले से बहुत बहुत बेटर होते जा रहे हैं। कुछ ऐसा मिल रहा है हमें, या कुछ हम ऐसा दे पा रहे हैं दुनिया को जो हम अदरवाइज अगर नहीं सोचते, नहीं अलग से बनते, तो हम वो दे भी नहीं पाते। सो मंत्र नंबर 4, count your blessings as gratitude is gold. You must have heard this song. Count your blessings and name them one by one, and it will surprise you what the Lord has done. Yes, हमने हमेशा कहा है और चाहिए और चाहिए और चाहिए, but have we ever said thank you for what God has given us? I don't think so. आपको हर दिन जितना आपने पाया उसके लिए थैंक यू करना बनता है. Thanks to everyone who has supported you. Have a feeling of gratitude, humility, and learn to write it down. अगर आप जर्नलिंग का शौक रखते हैं तो उसको लिखो. 3 ब्लेसिंग्स हर दिन. आज कौन सी ऐसी 3 चीजें हुई जिससे आपको सीखने को मिला? आज कौन सी ऐसे 3 लोग थे जिन्होंने आपको बहुत अच्छा फील कराया? ऐसी कौन सी 3 चीजें जिन्होंने आपको ये फील कराया, वाओ, दैट इज व्हाट एम आई? प्लीज journal them, write them, and when you're going to pick that journal after a month, you'll recognize and realize, oh my God, इतना सारा कुछ मिला है आपको पूरे मंथ में. There you are going to feel so much gratitude. And remember, जब हम gratitude की feeling रखते हैं तभी हमें abundance में और support मिलना शुरू हो जाता है. So now is the time of the last but most important mantra. The ultimate mantra is self-love. Whenever we pursue our own self to be the better version of ourselves, we find that we are so much beautiful. We're so much talented. We are so good. In fact, हमें हमसे ही प्यार हो जाता है. And we get to know that yes, we are worthy of all this success. We are worthy of all of it which is coming to our life. And when we have that kind of self-confidence, when we have that kind of self-praise, we start appreciating ourselves. And let me tell you one thing. अगर आप खुद को praise नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा. You must have heard, we have to push ourselves as nobody else is going to do that. And similar is the case when we talk about self-love and self-confidence. And my dear friends, जब आप खुद को appreciate करोगे तो देखना पूरी दुनिया आपको appreciate करेगी. That is where this most important mantra says, there should not be you versus others. It should be you versus you. Because you have to be the best version of yourself. Thereby, I would certainly say this. Let us compete with ourselves every day and learn how better we can be from each version of ourselves. And when you start becoming the best version of yours, you wake up excited, chasing your dreams. Instead of scrolling onto the social media feeds, you start scrolling into your life. आपको लगने लगता है कि अपनी लाइफ को कैसे हर दिन better करना है. And you upgrade yourself every now and then. So, are you all ready to upgrade and push that button of update and upgrade in your life? If yes, then let us put ourselves on the path of self-discovery together. Thank you.